Start the session. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay, so let's start. Hmm. Dipti is asking about the previous recorded lecture. So Dipti, haven't you received any recording video till starting? I don't know because I think everyone have received the recording. Yeah. Hi, sir. Yeah. Okay. I still till that this date I haven't received any recorded lectures. I checked with admin team Hmm. also. Hmm. They said they are facing some issue while uploading videos. So please make a patience. Oh, So okay. that's why. Yeah. Then I will confirm tomorrow with the admin team once. There is one person, Sushant, so I will just check with him, and I will make sure that you get the recorded video by tomorrow or maybe by Tuesday. Okay? Okay. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. Yeah. सर इट्स अपलोडेड सर सर ये रिकॉर्डेड वीडियो सर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, उसमें आता है ऑप्शन डाउनलोड का। नो सर पोर्टल से जो मैं देख रहा हूँ सर उसमें नहीं आता है। आई थिंक फिर बंद कर दिया होगा। एक बार उनसे कंफर्म कर लेना क्योंकि मेरे पास पोर्टल का एक्सेस भी नहीं है। मतलब वो कहाँ अपलोड करते हैं ये तक नहीं पता मेरे को, मैंने कभी देखा नहीं ये कि विजन की कहाँ जो करते हैं। वेबसाइट है उसी पे जहाँ से कोर्स खरीदा था वहीं पे अपलोड करते हैं। और मेरे को ये भी नहीं पता ना कोर्स कहाँ से खरीदते हो, तो एक बार उनसे पूछ लेना क्योंकि मैं मतलब यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ ना। मैं बस जी जी फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग में हूँ, तो मैं सैटरडे संडे ही आता हूँ। सो पूछ लेना एक बार कहाँ पे क्या है, मैं पूछता भी ठीक है हूँ। सर। सर प्लीज आप नोट्स अपलोड कर दीजिएगा। नोट्स मैं कर दूंगा। Sir, I have नोट्स not तो सर got इसमें the अपलोड है सर। link, sir. विच लिंक? Google Drive link. नहीं, गूगल ड्राइव पे नहीं। द नोट्स विल बी अपलोडेड नाउ ऑन द LMS पोर्टल, सो एडमिन टीम हैज डिनाइड टू अपलोड एनीथिंग ऑन द गूगल ड्राइव, सो you can just check into your LMS portal. In the notes section, the notes are available. Sir, I have also not got the portion of the Azure, so there is no portion uploaded. Which portion? सर पोर्टल पे नोट सेक्शन ही नहीं है, नोट सेक्शन पार्ट ही नहीं है सर, तो तो ये अपडेट बाकी लोगों को करवाएगा नोट्स कहाँ से मिलता है, ये जो बाकी लोग हैं? पोर्टल पोर्टल वी हैव सी सब सर पोर्टल पोर्टल पे पे है, तो कुछ कुछ नहीं सिर्फ है। नोट्स आधे हैं सर, मतलब आपने जो इसमें गूगल ड्राइव पे भेजे हैं वो पूरे नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। ठीक है, मैं कल कर दूंगा। मैं सारे नोट्स ना जो जो रह गए हैं मैं चेक करके मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है? हाँ, वो आपने जो ये भी दिया था पोर्शन वो भी नहीं है सर वहाँ पे। कोई नहीं, मैं अपलोड करवा दूंगा उसमें जो जो छूटा हुआ है। सर पोर्टल पे कौन सा सेक्शन पे नोट्स दिखाई देगा सर हमारे को? वो आई थिंक नोट्स में ही दिखेगा, नोट्स करके। किसी को आइडिया है, कोई दूसरा बच्चा जिसने किया है ऐसा? यस कहाँ पे सर, दिखता है? नोट्स की पोर्टल पे वो सेक्शन में है, जहाँ बट पर सर इनकम्प्लीट है। सर आपने जो गूगल ड्राइव में अपलोड किया है वो पूरा नहीं है, वहाँ पर इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैं दोबारा अपलोड करा दूंगा। एडमिन टीम तो आज छुट्टी पे है, सो टुमारो आफ्टरनून आई विल मेक श्योर दैट एवरी नोट्स हैज टू बी अपलोडेड। ओके, कल चेक कर लेना आप लोग, कल मैं अपलोड करवा दूंगा। आई विल जस्ट शेयर द नोट्स विद द एडमिन टीम, देन दे विल रेज इट। सहनवाज वांट्स टू आस्क समथिंग। यस सहनवाज। सर जो सैटरडे की क्लास है सर वो शुड बी 9 PM इंस्टेड ऑफ सैटरडे 6। सैटरडे की क्लास क्या है? सर 6:30 की बजाय सर 9 बजे के लिए आपने बात की थी। मैंने बोला तो था उनको, अभी पता नहीं, मेरे को अपडेट नहीं आया। आई विल अगेन चेक टुमारो, बोला था मैंने। ओके सर, सर प्लीज कंफर्म। ठीक है, मैं कल चेक करता हूँ। आज तो वो छुट्टी पे है, सो दे विल नॉट रिप्लाई। यस ओके, सर, प्लीज प्लीज सर इसे 9 PM तक कर दीजिए। ठीक है, मैं कल हाँ फिर से सर फॉलो अप कह ही लेता हूँ। रहे हैं सर 9 PM, क्योंकि 6:30 सर ऑफिस से आते आते परेशान हो जाते हैं हम सब। यस हम सर, सब मेरा भी मतलब, रोटेशनल शिफ्ट रहता है सर। ठीक है, मैं कल बात करता हूँ, इसको टाइम चेंज करवाता हूँ फिर। ठीक है? ओके सर। ओके, so now let's jump to the topic. Okay, so yesterday we were discussing about the disk वगैरह के प्रैक्टिकल किए थे हमने। So let's continue with the VM part again. So yesterday we have discussed about OS disk, then we discussed about temp disk, then we have discussed about the data disk, and I have discussed about the storage, or you can say hard disk types.
which was standard, standard HDD, standard SSD, and premium category. So these things we have discussed yesterday. Now today we will proceed further. So whatever configurations are there with the VM, we will complete that. So let's proceed accordingly. So for this practical, let me create one virtual machine first. Then I will show you the options which are pending in the VM part. And whatever notes are pending, so I will just share with the admin team. So tomorrow you should get all the notes in the portal, so you can check it over there. Now let me create one VM. So I will create one Windows based virtual machine. Then we will understand some topics. So I don't have any free resource group. I will create a new with the name of POP. Then the VM name I will give VM-01. Region will be UK South. In the availability option, I will choose no infrastructure redundancy required. Security type will be trust. And in the image, I will choose Windows Server 2022. Now let's talk about the size first. So whenever we are creating any server in the Azure, there will be some predefined size by the Microsoft. So these are the sizes related to the hardware of the server. So when I am creating any virtual machine, we need to choose the configuration. Configuration means what will be the RAM, how much will be the CPU cores, plus what will be the purpose. So according to the purpose of the server, we need to decide the RAM and CPU capacity. So for this, we have the sizes option in the Azure. If we are creating any server, whether it is Linux, whether it is Windows, we need to make sure we choose the proper size. So here we have some predefined size, and if you click on see all sizes, so you will get some options. Let me show you. My right click is not working. Why? Now it is working. Zamir wants to ask something. Yes, Zamir. सर ये जो साइज है ये भी टिकट में मेंशन रहेंगे या अपने से इनको करना होता है? देखो किसी किसी कंपनी में तो मेंशन होते हैं, किसी किसी कंपनी में पहले से ही सेट होता है कि अगर किसी की भी वीएम की रिक्वेस्ट आती है तो इसी साइज में बना के ही देनी है। मतलब उनका स्टैंडर्ड ही वही है कि कोई भी टिकट रेस करेगा इसी साइज की बना के दो। कुछ कुछ कंपनी में टिकट पे लिख के देंगे कि हमें इस साइज के इस कॉन्फ़िगरेशन की वीएम चाहिए। सो डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। So so when you click on see all sizes option here, it will take you to the size page, and here you will see a lot of categories like DS1, B2, D2S, B3. So these are the names of the series. There are some predefined hardware configuration at the Microsoft end. So these are the name of that series: DS1, B2, DS2, B3, B series. Then again the E series, D series. So these are the series, and here there are some categories also. If you will search in the Microsoft documentation, sizes of Azure VM, then in their official link also you will find these details. So if you go to this link, here you will see the sizes. See, these are the family: D series, C series, A series, D, S, V, etc. And if you scroll down, so you will see these names: A family, B family, D family, like this. So these are the family details. So let me give you the overview. You don't have to remember this. This is not important. No one will ask you this question in interview, but you must have the basic understanding what is the meaning of all these options. So generally when I talk about the VM sizes means the hardware sizes. So here we have general purpose, we have compute optimize, we have storage optimized, then GPU accelerated, then high performance computing. So
So general purpose is compute optimized, storage optimized. Then we have memory optimized as well. So these are the series, or you can say these are the categories of the hardware that we can use in the Azure. When I talk about general purpose, so general purpose we choose when we need the server, we need the hardware with the balance capacity. If you need the server with the balance capacity, where you can save the price as well, plus you don't want to use that server for very heavy workload. बहुत ज्यादा हेवी वर्कलोड के लिए यूज नहीं करना है. इट्स a light workload that you want to run on that particular server. Maybe that is for testing, maybe that is for any development job, maybe you want to use that server for any kind of, let's say, running normal website, lightweight website. So in that category, if you want to save the money also, and you don't require very special configuration of the hardware, you need balanced CPU, balanced RAM, then you can go with the general purpose category. So general purpose category is the cheap category that we have in the Azure. Second category is compute optimized. So compute optimized we choose when we need very high density of CPU. If you require a kind of server where you need very good performance in the CPU, that time you can go with the compute optimized category. So compute optimized category of servers generally are used in the batch processing jobs. When you have the batch processing workload, let's say you want to run any script. मान लो कोई स्क्रिप्ट चलानी है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. लेट्स से you go to the company every day and you punch your attendance. There is a biometric system in the company. Most of the company have that. So you go there, you punch your attendance with the punching card or with the thumb. Every company have their own process. So when you punch the attendance in the biometric machine, the biometric in the backend is connected to the database. It is connected with the SQL database. So SQL server will be there where the biometric will be connected. So through the network, when you punch your attendance, that attendance will be routed to the SQL server, and all the entries will be recorded in the SQL itself. Now, from the SQL, what your company have done, from the SQL, your company wants to get the report of every attendance along with the time and date in the Excel format. So what your company has does, the admin of the SQL has created one of the script. There is one, let's say, PowerShell script running inside this SQL, and whatever punches are being saved in this SQL, after every 10 minutes, the script runs in the SQL server, and with that script, the data is getting converted to the CSV format, to the Excel format, and that Excel will be shared with the management now to check your attendance record. So let's say this kind of setup is there. So in this setup, we require the compute optimized category, because here the CPU stress is very much. Here the CPU capacity is highly required, because when we want to run any kind of batch jobs, this is generally like a batch job. After every 10 minutes, we are running a script automatically without manual intervention. So when we are running any batch script kind of thing, so we require high density of CPU, because it will be a lot of pressure on the CPU that time. So in these kind of category, we can go with the compute optimize. So if we have the requirement where we require very good performance of the CPU, we can go with the compute optimized category. So Pooja wants to ask something. Yes, Pooja? सर मैं वो बोलने वाली थी कि वो जनरल पर्पस का थोड़ा रिपीट करिए मतलब जनरल पर्पस देखो ऐसा होता है, जैसे अगर हमारे को बहुत ज्यादा सीपीयू और रैम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी नीड ए सर्वर जहाँ पे बैलेंस सीपीयू बैलेंस रैम में भी काम चल जाएगा. मतलब कुछ लाइट वेट पर्पस के लिए मुझे सर्वर चाहिए. लेट्स से आई वांट टू डू सम टेस्टिंग, मुझे किसी चीज की टेस्टिंग करनी है, या फिर मुझे कोई डेवलपमेंट जॉब करना है, या फिर मुझे कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन रन करनी है, या फिर कोई लाइट वेट वेबसाइट रन करनी है. सो फॉर दैट पर्पस आई डोंट रिक्वायर मच सीपीयू एंड मच रैम. मतलब मुझे बहुत परफॉर्मेंस वाला सर्वर नहीं चाहिए, मेरे को बैलेंस सर्वर चाहिए वेयर आई कैन सेव द कॉस्ट एज वेल, जहाँ पे खर्चा भी कम लगे और मेरे को ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं चाहिए, मेरा काम भी हो जाए. सो इन दैट केस आई कैन गो विद द जनरल पर्पस. सो अगर कंपनी को कोई डेवलपमेंट जॉब करनी है, कैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उस केस में बहुत ज्यादा लाइट वेट, बहुत ज्यादा हेवी सॉफ्टवेयर नहीं है, कोडिंग करनी है, या कोई टेस्टिंग के लिए चाहिए, सो दे कैन गो विद द जनरल पर्पस एंड दे कैन सेव देयर मनी. So that is the purpose of general purpose series. Hope you understood.
think you are on the mute. Pooja, Yes, did sir. you Just understand? a minute. Yeah. Okay. Yes. So compute optimize we require when we need very high density of CPU. Just like in the batch processing jobs, we need the compute optimized category. Third category is storage optimized. So storage optimized servers we need when we need very good capacity of read and write performance. अगर मुझे read and write की performance अच्छी चाहिए server में, means if I want to open any data, it should open without any performance glitch. If I want to do the copy paste of any data, it should happen without any performance glitch. So if we have any storage kind of requirement, then we go with the storage optimized server. So in case of SQL servers or any kind of database we go with the storage optimized in the company. If I want to run, let's say, SQL server, we have a lot of databases in the company. Companies have SQL database, companies have MariaDB, company have PostgreSQL, MongoDB. So they have different category of databases. So in order to run the database, company requires the storage optimized servers, where the hardware should be capable to maintain the read and write capacity. And in the SQL Server environment, we also need the memory optimized category as well. So when we want to run any databases, for the database, we require very good storage. We require very good RAM also. Because in the databases, what happens, there is a page memory concept. You don't need to know about this. ये बहुत important नहीं है आप लोगों के लिए. There is a page memory concept. So for running the page memory jobs, we require the memory optimized servers in the backend. You might have seen that whenever we are using any operating system, if I have, let's say, 4 GB of RAM, so 4 GB of out of 4 GB RAM, some RAM will be used by the operating system. अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है तो 4 GB में से कुछ पार्ट तो आपका OS ले जाता है and you are hardly left with, let's say, 3 GB or 3.28 GB something, suppose, for example. So there are some page memory jobs which runs in the backend जो कि OS को चाहिए होता है. OS requires some portion of the RAM for running the page memories. So for that purpose, if we have a lot of page memory kind of jobs, then we go with the memory optimized server. So generally in the case of SQL databases, if we want to run any SQL database in the company, so we need a server where we should have very good storage quality as well, and we should have the memory as well. So that time we prefer these kind of server, the storage and memory optimized. Another category is GPU accelerated. So GPU means graphical processing unit. So we choose the GPU accelerated when we need very ultra level of graphics performance. If you want to do that kind of job where you are doing a lot of graphical processing, बहुत ज़्यादा animation का काम है. Just like let's say you are doing any game development, your developers are writing the code for the game, the build activity is happening. So for processing the games, we require the GPU accelerated server, where the graphic performance will be very high. If your company is doing any animation, VFX animations, like they are, let's say, processing any movie, कोई movie की processing चल रही है, they are shooting any movie. So in that scenarios also we need the GPU accelerated servers because graphics will be required. If we are processing any cartoons, we require the graphical servers. For the game development also we require the graphical servers. So graphical servers are very expensive. Like if you talk about the GPU acceleration, it is 6 times more than these categories. It is highly, you can say, expensive server in the category of cloud because it comes with the graphics adapter. इसमें graphic cards लग के आते हैं so that you can play your animations. So it is highly expensive server. So for the purpose of game development, video processing, or any kind of animation processing, we use this GPU server. So जिन company का business ही इस चीज का है, they obviously go with the GPU acceleration. Last category is HPC. We call it high performance computing. So we use the high performance computing server where we need everything intensive. अगर आपको सब कुछ चाहिए सर्वर में, you need very good performance in the RAM, you need very good performance with the CPU, you need very good performance with the graphics, your storage should also be very good for read and write, then you go with the high performance computing. So in the HPC, you get everything.
The performance of this server will be ultra. It is very good and it is also very expensive. The first expensive server is GPU. सबसे expensive यही होता है. Second expensive server will be HPC, high performance computing. So in this you will get everything. इसमें सारी performance अच्छी होती है. But if you have any specific requirement, then we can choose accordingly. So for the testing and development scenario, company generally go with the general purpose. क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा high processing के CPU या RAM नहीं चाहिए होते. But for special purpose, they choose the server accordingly. So HPC is also used in the company if they need everything. Let's say मेरे को कोई SQL server चलाना है and it is going to process a lot of data. बहुत सारा data है उसके अंदर. I need very good storage optimization as well. Plus I need memory optimization as well. So both the things are available in the HPC. ये दोनों ही quality HPC के अंदर मिल जाएगी. Plus in the HPC you can get the GPU addition as well. आप GPU add कराना चाहते हो, that also you can add. It is also supported in the HPC. So it is highly expensive. So these are the categories, these are the sizes. No one will ask you about this in the interview. You don't have to remember, but you should know the fundamental. Under these categories, now we have some series. Just like here you can see, we have general purpose. These are the general purpose machine. And under the general purpose, these are the name. DS1, V2, D2S, V3, D2AS, V4, like that. And every category will have their own configuration. If you go with the general purpose DS1, V2, you will get 1 core of CPU. 1 core of CPU रहेगा आपके सर्वर में, plus 3.5 GB RAM will be provided to you, and you can add maximum 4 data disk. जो हम data disk add कर रहे थे ना कल, so if you have chosen this configuration D2 DS1 V2, you will get only 1 core of CPU, 3.5 GB of RAM you will get, plus you can add 4 data disk additionally. These are the IOPS, input output operation per second. So this is related to the performance. The server which has maximum IOPS, their read and write capacity will be very good. मतलब copy paste की speed उनमें अच्छी होती है. So just like here you can see it is 6400. So this server has got very good copy paste speed. तो इतना कुछ है नहीं है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है. Now local storage means if you have chosen this one D2S V1, D2S V2, here you will get 7 GB of local storage. What is 7 GB of local storage? It is temporary drive. जो कल मैंने आपको temp drive दिखाई थी ना, so temp drive is also by default created. And yesterday I have chosen this configuration 3.5 GB RAM 1 CPU, and that time I have got 7 GB of temp drive. So it is also predefined. You cannot make the changes in the temporary storage. The size will be decided as per the VM size. So if you have chosen DS1 V2, you will get 7 GB of temporary drive. If you have chosen D2S V3, you will get 16 GB of temporary storage. Then there are some premium disk support as well. If you have chosen these configuration, all of them comes with the premium disk support. Premium disk means premium SSD. जो कल मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, स्टैंडर्ड एसडीडी, स्टैंडर्ड एसएसडी एंड प्रीमियम एसएसडी. So these category also supports the premium hard disk, and the cost per month will be this one. So if we have attached this, we have to pay this kind of cost to the Microsoft if it is running all the time. Then comes these are some of the series where you need, let's say if I expand this is also general purpose category. If I expand this is also general purpose. So we have a lot of sizes in the general purpose. General purpose में बहुत सारे sizes है because it is used in the development scenario and testing scenario. And even some company also uses this in the production as well. If we have very lightweight service running, we can go with the general purpose. जैसे मुझे मान लो DHCP चलाना है, so DHCP does not require very much capacity. But Active Directory needs it. Active Directory के केस में मुझे अच्छा सर्वर चाहिए होता है. But to run only DHCP, we don't require very much capacity of the server. So that time we can go with the general purpose. If I want to run my website on the server, I don't require very much computing capacity. I can go with the general purpose. So in the production also we use the general purpose if we have any lightweight service. And in the development and test, company uses the general purpose. So if you expand, here also you can see the memory optimize. I told you what is memory optimize, and the series starts from E. So E2, B, D, S, V5. Here you get 2 CPU, 16 GB of RAM.
you can attach 4 extra disk. This is the IOF. So here you can see it is very high. It means copy paste speed will be very good. The temporary disk will be of 75 GB. Premium disk is supported and the price is high. When you scroll down, so you can expand and you can see memory optimized categories are there. Compute optimize, I told you. So compute optimize is also there. Again, general purpose, memory optimize. So if you will start scrolling and expanding, so you will see different types. So you don't have to remember this. GPU, see, GPU is also here. It starts from N. So all the N series servers are the part of GPU acceleration. जितने भी N से start होते हैं, N, they are the GPU accelerated servers. So these are for the knowledge that we have the size option as well. So you cannot say to the Microsoft that I need, let's say, 6 CPU in the server. I need 5 GB RAM in the server. No, they have their own predefined capacity and you have to choose accordingly. Every cloud have their own hardware capacity. You cannot inform to the company that I need a customized hardware. No, you have to choose from this series itself. You cannot say that, okay, you are offering 8 cores of CPU, but I need 9 cores of CPU. They will say, okay, you want 9, then we have the nearby configuration, let's say for 12 cores of CPU, so you need to pick this one. So you cannot get your hardware customized. They have their own sizes available. You have to choose from there itself. RAM, CPU, you cannot customize. Only the disk size you can customize in the cloud. आपको जिस साइज का डिस्क चाहिए वो आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट रैम एंड सीपीयू दे आर द पार्ट ऑफ VM sizes. So you have to stick into it. So इसको देख लेना एक बार, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी शक्ल देख लेना इसकी, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड जस्ट गो थ्रू विद इट. कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. ऐसी चीजें याद करके कुछ नहीं होने वाला, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. So in the size, I will choose DS1B2, which is general purpose category. I will use 1 CPU and 3.5 GB RAM because we are not running any task right now. अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं server के अंदर. It is just a blank server that we are deploying. In future, we will start doing some activity also. So that time we will use high configuration servers as well. But for now, this is enough. This is general purpose category, DS1B2. See, you can verify from here, DS1B2. It is a general purpose server where I will get 1 CPU and 3.5 GB RAM. I can add 4 data disk and I will get 7 GB of temporary drive, temporary storage. So I will go with this one क्योंकि बस मुझे install करना है. And for the Windows Server installation, we require at least 3.5 GB of RAM. And you cannot compare this RAM and CPU with your local RAM and CPU. जो हमारे लैपटॉप पे रैम सीपीयू होती है ना, इफ यू हैव लेट्स से 4 GB ऑफ रैम इन योर लैपटॉप, you cannot compare it with the 4 GB of RAM with the cloud. These are the ultra hardware sizes, so you cannot compare it. If you have let's say 2 cores of CPU in your local laptop, you cannot compare it with 2 cores of CPU in the cloud, because in the cloud we use the Xeon, ultra Xeon processors. And in our normal laptop, it is Intel processors, Intel i3, i5, i7. So you cannot compare the speed with the Xeon. Xeon has a lot of cores. It is, let's say, if you are using i7 processor in your laptop, so Xeon processor is, some Xeon processors are 7 times high than the i7. Some Xeon processors are 4 times high than the i7. So you cannot compare the hardware with your local laptop configuration. If here I have chosen 3.5 GB of RAM, it means in your local laptop it is equivalent to the 8 GB of RAM. आपके लोकल लैपटॉप में जितना 8 GB का रैम होता है ना, उसके बराबर ये 3.5 GB है क्लाउड में. In your local laptop, if you will try to install Windows Server 2022, and if you have 3.5 GB of RAM or let's say 4 GB of RAM, it will not get installed. Install ही नहीं होगा. So it's a cloud hardware configuration, not your laptop hardware configuration. So don't compare it. आपके लोकल लैपटॉप पे आप इतनी रैम में विंडोज सर्वर इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे. इट विल नॉट वर्क. फैटल एरर आएगा, सीधा रैम का एरर आएगा. इट विल नॉट गेट इंस्टॉल्ड. और मिनिमम 4 GB की रैम चाहिए होती है विंडोज सर्वर इंस्टॉल करने के लिए. एटलीस्ट वी रिक्वायर 4 GB ऑफ रैम.
और यहाँ पे देखो 3.5 GB में भी इंस्टॉलेशन हो रही है, बिकॉज हियर द 3.5 GB इज इक्वलेंट टू 8 GB ऑफ रैम इन द लोकल सिस्टम्स, दैट इज वाई इट इज हैपनिंग। आप अपने लैपटॉप पे अपने डेस्कटॉप पे करके देखो, नहीं होगा इतनी रैम में, इंस्टॉलेशन ही नहीं होगी। सो आई विल गो विथ 3.5 GB रैम, 1 कोर ऑफ CPU। हल्का सा मैंने हार्डवेयर ले लिया है इन द जनरल पर्पस। नाउ बाकी का प्रोसेस वही है। आई विल जस्ट डिप्लॉय वन ऑफ द सर्वर, एक सर्वर डिप्लॉय करते हैं फटाफट, एंड लेट्स अंडरस्टैंड मोर ऑप्शंस। So we will enable 3389 RDP. Next. So here you can see there is a OS disk, and here you can choose the hard disk category. I have shown you yesterday about this as well. OS disk size, by default it is taking 127 GB of C drive. If you want, you can change the sizes also. आपको सी ड्राइव का साइज चेंज करना है, यू कैन डू इट राइट नाउ, इवन यू कैन डू इट लेटर ऑन एज वेल, आप बाद में भी कर सकते हो, नो इश्यूज। बाय डिफॉल्ट इट विल गो विद 127 GB ऑफ सी ड्राइव, सी, बट इफ यू वांट टू मॉडिफाई दिस यू कैन डू दिस लेटर, आप इसको बाद में भी कर सकते हो। एंड हियर यू कैन चूज योर हार्ड डिस्क कैपेसिटी, आई विल गो विद द प्रीमियम। if you want to add the data disk right now, you can also do it right now, and after the installation also you can add it later on, जैसे कल हमने इंस्टॉलेशन के बाद ऐड किया था। सो इफ यू वांट टू डू इट राइट नाउ, द सेम प्रोसेस इज देयर, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट एंड अटैच a न्यू डिस्क, देन you can just give the disk name like disk-01, कुछ भी दे दो, then size, so by default it is taking 1 TB, but you can click on change size and you can change your hard disk type as well. I will go with the standard and I will choose 4 GB, only 4 GB of storage, click on OK, then OK. So now 4 GB of additional data disk has been added. You can delete it even after the deployment also, you can delete this one. So it's up to you whether you want to do it right now or later on. So Rajeshwar wants to ask something. Yes? हेलो Yes, Rajeshwar. सर, मेरे को ना एक बार डिटैच करना और बताना। अभी इंस्टॉलेशन के बाद दिखाता हूँ। ओके। So I will add one additional hard disk here. 4 GB will be the size. Click on next. In the networking, we will not make any changes right now. इसको हम बाद में पढ़ेंगे. So next. And in the tax option, if you want to add the tax, you can. So owner will be John. Our owner is always John. Purpose will be testing. Then review plus create. So it is running the validation. Now create. So let's wait for the deployment to happen. Then I will show you another options in the VM. Then we will complete this part. After this, we have to start with the high availability topic. So okay. So I was just scrolling my LinkedIn and I just got to know that there is a character Bhide in the
Tarak Mehta ka Ulta Chashma, and that person has got the offer from physics wala, and the offer is for 1 crore rupees. He's he's going to become the teacher over there, and he will get 1 crore rupees as an annual package. It will be around, I think, 6 lakh rupees per month in hand. I don't know whether it is real or not, but I just got to know about this. So one of the CTO has shared this information, Chief Technical Officer. It means it is right. It is real. I don't know how many of you know that character. It is in Tarak Mehta ka Ulta Chashma. So again, one general knowledge. So this VM is deployed. Just go to the virtual machine. We have VM-01. It is in the running state. It is running window, and this is the size, and this is the IP. And there are two disks. One disk is OS disk, and another disk is data disk. So if you click on this, you can see if I go to the disk option, there are two disks running here. One is OS and one is data. So if you want to detach the data disk, you can always click on this option. You can just click on detach option and it will get detached. Then you can click on apply. Then it will be removed from this particular server. Otherwise, you can discard, it will be here. So now let's understand some options. So if I go to the overview, there is one option, connect. So connect you already know. If I want to take the remote of this VM, we can go with the connect option. There is one start option which is grayed out. Start generally we use if my server is in shutdown state. If you will shut down the server, you can start it from here. So right now it is in the running status. That is why the start option is not highlighted. Another option is restart. If there is some issue in the server or if you need to restart the server, you can always do the restart from here. So you can just click on the restart and in the notification, the restart option will come. So you can try this option. Now comes the stop. Stop. So stop is for shut down the VM. It is to shut down the VM, but in the real production environment, company does not shut down the server. कंपनी तो कंपनी सर्वर को शट डाउन करती ही नहीं है. They don't do that. So this option has got a different meaning also. You can shut down your server with the stop, but this option has got some different meaning. What is this? So you can call it deallocate as well. The stop option is also known as deallocate, deallocation. What is the significance of this? Generally, what happens whenever we deploy any server in the cloud? So in the real scenario, there are some racks in the Microsoft data center. In the official data center of Microsoft, there will be a data center room. If I have chosen the UK South region, अगर मैंने UK South choose कर लिया, so in the UK South, Microsoft have their physical data center. उनके पास एक बड़ा सा physical data center है. That is cloud. वही तो पढ़ाया था मैंने आपको starting में. In the different part of the world, they have physical data center. So in the UK South, if I have chosen UK South, it means in the UK South they have a physical data center. उनका एक फिजिकल डेटा सेंटर है एंड इन दैट फिजिकल डेटा सेंटर देयर आर अ लॉट ऑफ रैक्स. वहाँ पे बहुत सारे रैक्स लगे हुए हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज, दे हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल सर्वर्स, दे हैव राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, storages, network centralized servers. A lot of things are there and they all are physical, and we are using that through the cloud model. Through the network we are using everything with the help of internet. This is what we are doing. Now what happens? Vinith wants to ask something. Yes, Vinith. Vinith. Okay, I'm audible, Yeah. sir. Yes, you are. Sir, while we were doing the restart, the previous one logs will be removed or not? Logs will be there. It Logs will will not be be there. removed. Yes. तो जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ एरर आते हैं, हम उसको रिस्टार्ट करके फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे लॉग्स में रहेगी. Yes, it will be. और When अगर you हम will restart something, the logs will be generated that from your ID you have done the restart, and you cannot delete that. That is one of the cloud thing. You cannot delete your logs. It will be there. अगर स्टॉप करेंगे तो चला जाए.
स्टॉप करने पे भी लॉक्स रहेंगे, लॉक्स विल बी देयर। एक तो Okay. टेम्पररी डिस्क के लॉक्स होते हैं जो कल मैंने बताए थे, वो जी तो बस स्टार्टअप्स के होते हैं, बट अदर लॉक्स भी होते हैं। टेम्पररी डिस्क वाले लॉक्स तो चले जाएंगे, इट विल बी रिमूव्ड, बट जो अदर लॉक्स होते हैं इट विल बी देयर, यू कैन नॉट डिलीट देम। गॉट इट सर। ठीक है। Yes. So, so in the real Microsoft data center, there will be some physical servers, and whenever I install any window, जब भी मैं कोई विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ या लाइनेक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, whenever I am deploying any Windows server or Linux server, it is actually getting deployed in one of the physical server. जो Microsoft के real data center है, in the real data center there is a physical server. In the real physical server, my VM is getting created. My VM is getting deployed. This is how the actual scenario works. Now, there is an option which is called stop. You can also call it deallocate. So generally what happens, I told you in the Microsoft data center, there is a rack. In the rack, we have a lot of servers connected. बहुत सारे physical servers connected है like this. Let me show you. This kind of, see, this kind of servers are connected in the rack. These are the physical servers. ये servers है. This is not router switch. It looks like router, but it is not router. It is Dell server, Dell EMC console. ये server है. ऐसे होते हैं देखो असली के सर्वर. These are the real physical servers. ये सब सर्वर है. These are the hard disk. ये सब hard disk connected है देखो रैक पे. So these are servers. See, this is also server. ये router नहीं है. These are servers. Router is a different thing. Server is a different thing. ये भी server है देखो. These are the servers and these are the hard disk. ये सब physical hard disk लगी हुई है देखो. So when we deploy the VM, it is actually getting deployed in one of the server. किसी भी एक रैंडम सर्वर में जाके मेरी VM इंस्टॉल हो जाती है. दैट इज द क्लाउड प्रोसेस. इफ आई विल स्टॉप द VM, अगर मैंने VM को स्टॉप किया, स्टॉप मीन्स डी एलोकेशन, what will happen, because my VM is attached to any one of the physical server, मेरी VM किसी ना किसी एक physical server से connected है, right? Let's suppose my VM is installed here. जो VM मैं चला रहा हूँ VM01, let's suppose it is installed on this physical server. When it is attached with the physical server, it is consuming my CPU. ये मेरा इसका CPU यूज कर रहा है ना. It is consuming my RAM. CPU और RAM यूज कर रहा है ना ये. If my VM is connected in the physical server, it means it is using my CPU and RAM. That is why it is running. तभी तो रन कर रहा है. It means there is a cost. जो बिल बनता है सर्वर का मंथली, it is getting created because of the CPU and RAM consumption. But there are some servers that we don't want to use all the time. कुछ सर्वर ऐसे भी होते हैं जो मैं हर टाइम यूज नहीं करना चाहता कंपनी में. There are some production server that should be up and run 24/7 into 365 days. जो प्रोडक्शन के सर्वर्स है, द रियल सर्वर्स लाइक एक्टिव डायरेक्टरी, DHCP, DNS, फाइल सर्वर्स, दे शुड बी अप एंड रन ऑल द टाइम. दे विल नॉट बी शट डाउन. वो तो ऑन रहेंगे. बट इफ देर इज अ डेवलपमेंट सर्वर, कोई ऐसा सर्वर जिसपे मेरा डेवलपर बैठ के कोडिंग करता है, डू आई नीड इट ऑल द टाइम? नो. इफ माई डेवलपर इज वर्किंग इन 9 to 5 शिफ्ट, अगर वो मॉर्निंग में 9 to 5 काम कर रहा है, आफ्टर दैट ही विल जस्ट गो टू हिज होम, नो अदर टीम विल कम, डू आई नीड दिस सर्वर? I need this development server only between 9 to 5. When the developer will come, he will do the coding. After that, we don't need this server. So why we should keep it on? क्यों ऑन करके रखूं मैं? If I will keep it on, it will use my CPU, it will consume my RAM, it will be in the running state, so I need to pay the bill. चाहे मैं यूज नहीं कर रहा, बट ऑन तो है ना. It is in the running state. Why? Why we need to keep it on? If it is not in use, why we need to keep it on? So if you want to save the cost in the cloud, you can do that. You can just do the stop. Stop the server. Stop the server. When you will stop the server, it will be shut down. And when it will be shut down, what is going to happen in the back end? The VM which is installed here in this physical server, it will be detached. It will be deallocated. मतलब यहाँ से हट जाएगा ये. The image will be detached. अभी ये इस हार्डवेयर पे कनेक्टेड है ना, so it will be detached, it will be removed, it will get removed from here. यहाँ से हट जाएगा. And because of this, my CPU and my RAM consumption is not happening, क्योंकि सर्वर तो बंद हो गया ना.
This physical server is not down, it is on, but my VM, it is detached. वो वहां से हट गई है. And because of this, it is not using my CPU and RAM. And with this, I am able to save the cost. मैं VM का खर्चा बचा लूंगा. Next day, when I will come to the shift, I want to use this server again. I will start it again. मैं इसको फिर से on कर दूंगा. Again, it will be attached with the hardware. जरूरी नहीं है उसी हार्डवेयर पे अटैच हो. नेक्स्ट डे व्हेन आई विल टर्न इट ऑन, मे बी इट विल गेट अटैच विद दिस नेक्स्ट हार्डवेयर. So whatever hardware will be available, it will get attached accordingly. Then my cost will be start. So because cloud works on the pay as you go model, so in the pay as you go model concept, whatever you are using, you are only paying for it. If you are using any server for 2 hours in a day, you just have to pay the bill for 2 hours. So if I have shut down the server at night, I don't need to pay the bill for that. I will only pay the bill of my day, not night. So this is one of the methods through which we can save the cost. So you can deallocate the server when you don't want to use them and you want to save some cost. आप उसको deallocate कर सकते हो. And there is one limit of deallocation as well. When you will deallocate any server, whatever data is there in the temp drive, जो temp drive कल मैंने आपको दिखाई थी ना, whatever data is there in the temp drive, that will be lost. For sure it is going to be lost. कुछ भी अगर आपने रख दिया, that is going to be lost. That is why Microsoft says don't keep any data in the temp drive. उस पे कुछ वैसे भी नहीं रखना चाहिए हमें. But yes, this is one of the scenario based question. If I will save any data in the temp drive and if I will do the deallocation, means if I will stop the VM, after that if I will start it again, my data in the temp drive will be lost. मेरा data erase हो जाएगा. But whatever data is there in the data disk, that will be there. It will not be removed. That is why we have the data disk. Whatever start you will do, it is not going to impact your data disk. Data disk आपकी रहेगी. So now how the charges will be calculated? If any VM is in stop state, अगर कोई VM stop है, how the charges will be calculated? You will not pay for the CPU that time. You will not pay for the consumption of RAM that time. But if there is any storage, अगर आपने उसमें कोई data disk connect कर रखी है, and if there is any data inside that data disk, you have to pay for it. इसका पैसा नहीं कटेगा. Data तो है ना. You are not actively using the CPU and RAM when the VM is stopped, but storage में data तो है ना. So you have to pay for the data. If any IP is attached, जैसे IP attach होती है ना, public IP, it's only public IP, not private IP. If any public IP is attached with the VM, this cost will also not going to be reduced. You have to pay for it. चाहे सर्वर यूज करो ना करो, if any public IP is connected with the VM, the public IP cost will be there. If any data is there in the data disk, the data cost will be there. The only cost that you can save is CPU and RAM, and that is also good. If you are able to save the CPU and RAM cost, you will be able to save the money for the company. Well, that is not our task. आप लोगों का काम नहीं है पैसे बचाना. That is the responsibility of the architect. They plan these kind of things कि ऐसे ऐसे हम पैसे बचाएंगे, because they are responsible for the budgeting also. So this is how the scenario works. So right now the VM is in the running state. If you will stop the VM, if I will stop, it will be detached. See, deallocation operation usually complete within 1 to 2 minutes, but it can take up to 90 minutes as well in some cases. मतलब VM stop हो जाती है 2 मिनट्स के अंदर अंदर, but कभी कभी 90 मिनट्स भी ले लेती है if there is any issue. Otherwise इतना लेता नहीं है ये. We can just click on yes, and now in the bell icon you can see it is stopping my virtual machine. So it is in the process, and from the running, after some time it will go into the deallocate state. कुछ टाइम में यहाँ पे deallocate आ जाएगा. So let's wait for this to happen. Just give me 1 minute. I need to attend one call.
Okay, I am back. So now you can see the VM is stopped, means deallocated. बंद हो गई ये VM. Now you cannot take the remote because this server is shut down. If you want to start it again, you can just click on start. आप start पे click कर दो, it will be start. Then it will come to the running state. But let's suppose I want to implement automation here. मान लो मुझे यहाँ पे automation लगाना है. I know that every night I don't need this server. This is a development server, or let's say it is a testing server. I don't need it after 12 a.m. midnight. रात के 12 बजे के बाद मुझे ये सर्वर नहीं चाहिए. So I can manually shut it down, but we are the humans. We can do the mistakes. We can forget. हम भूल सकते हैं, हो सकता है रात को 12 बजे इसको बंद करना भूल जाए हम. बंदा अपने ही उसमें था, मजे में था, so he forget to stop the server and server on रह गया. We were not using it. Cost तो लगेगी ना फिर. Server is on. There will be CPU cost. There will be RAM cost. So if you want to implement the automation here, there is one option. If you scroll down, so there is auto shutdown option. Under the operations, you can see there is one auto shutdown option. You can just go to the auto shutdown, and here you can just enable it. Right now it is off. By default it will be off. You can just on it, and you can schedule the shutdown timing. You can just specify the timings, and you can choose your time zone. So right now it is in Indian timing zone. If you want to change the time zone, you can also do that, and then you can click on save. So automatically at this timing every day the server will deallocate automatically. And if you want to send the notification to the user as well, जो बंदा इसको यूज कर रहा है उसको पहले नोटिफिकेशन आए. जब उसने रिमोट ले रखा है, लेट्स से देयर इज अ रिमोट लेके बैठा है बंदा, शट डाउन होने वाला है, सो 5 मिनट 10 मिनट्स पहले उसको नोटिफिकेशन जाएगा स्क्रीन पे दैट दिस सर्वर इज गोइंग टू बी शट डाउन, प्लीज सेव योर वर्क. सो इफ यू वांट टू डू दैट, यू कैन क्लिक ऑन यस एंड यू कैन एंटर द वेबहुक यूआरएल और ईमेल एड्रेस. उस बंदे का ईमेल एड्रेस डाल दो, उसको नोटिफिकेशन जाएगा. और अगर उसकी स्क्रीन पे किसी टूल पे भेजना है, देन यू कैन एंटर द वेबहुक यूआरएल. सो लेट्स से आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली टिकट क्रिएट हो जाए, तो उसका एक वेब हुक का यूआरएल होता है. एवरी एप्लीकेशन हैज ए वेब हुक यूआरएल दैट यू कैन एंटर हियर. तो उससे फिर उसका अपने आप टिकट भी क्रिएट हो जाएगा. और अगर आप चाहते हो ईमेल पे चले जाए, देन यू कैन एंटर द ईमेल. इफ यू डोंट वांट टू नोटिफाई समवन, अपने आप ही शट डाउन हो जाए, देन क्लिक ऑन नो, सेट द टाइमिंग एंड क्लिक ऑन सेव. उसके बाद the server will be shut down automatically. Next day when the user wants to start it again, so he will have to manually restart it. उसको manually restart करना पड़ेगा. ये बस shut down करेगा. This option will just do the stop, but it will not start the server again. You have to start it. So next day जब आप आओगे, you have to start it again. But मान लो इसमें भी automation लगाना है. I want to implement the automation here कि बंद तो हो जाएगा, but start भी अपने आप हो. I don't want to start it with my manual intervention. अपने आप start हो. तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए there is one automation account. If you search for the automation, there is one option automation accounts. So you can create the automation accounts. You can define the timing कि इस टाइम में सर्वर अपने आप बंद हो जाए, इस टाइम में सर्वर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. You don't have to manually touch this then. But this option is not in our course, so we are not going to discuss more about it. It is the part of AJ305 solution expert. जो आर्किटेक्ट एक्सपर्ट लेवल होता है उस पे आता है ये सब, क्योंकि इसके लिए वेब हुक को समझना पड़ता है. इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट द ऑटोमेशन अकाउंट्स, यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ वेब हुक, हाउ द वेब हुक यूआरएल वर्क्स, जो कि अभी हमने नहीं सीखा है. But yes, this option is there. If you want the server to be restarted automatically, you can set up the automation account. बंद करना है तो बंद करने के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन है ही. You can always go with the auto shutdown option. तो अपने आप ही बंद हो जाएगा. Now, Pooja wants to ask something. Yes, Pooja. सर जैसे कि हम उसमें ऑटो शटडाउन ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो वो 12 बजे अपने आप ऑफ हो जाएगा. हाँ, अपने आप ही बंद कर लेकिन देगा. हाँ मतलब सर, लेकिन जब वो 10 बजे अगर हम ऑटो ऑन भी कर रहे हैं या फिर खुद से भी ऑन कर रहे हैं, तो जो भी डेटा था वो पूरा इरेज नहीं हो जाएगा का अगर हम स्टॉप पे क्लिक कर रहे हैं या फिर उसको डिटैच कर रहे हैं ऐसा कुछ तो. तभी तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है ना. अगर आप कोई डेटा पे काम कर रहे हो तो नोटिफिकेशन यूजर को पहले ही चले जाएगा कि अपना डेटा सेव कर लो, सर्वर शट डाउन होने वाला है. तो सर वो हम डेटा कहाँ पे सेव करेंगे फिर?
वो जो हम डेटा डिस्क ऐड करते हैं एडिशनल, उसी में डेटा ओके, रहता है ना। तो सर्वर ऑफ भी हो जाएगा तो यस डेटा यस। तो रहता ही है ना। जैसे हम अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं तो हमारा डेटा थोड़ी ना चले जाता है, डेटा तो रहता है ना स्टोरेज में। लेकिन सर यहाँ पे वो वीएम तो अपने आप मतलब जैसे कि डिस्क वगैरह सब वो डेटा इरेज तो नहीं करेंगे ना अगर हम स्टॉप पे नहीं नहीं क्लिक नहीं कर रहे हैं तो? नहीं नहीं नहीं, डेटा इरेज नहीं होता, डेटा रहेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, स्टोरेज में रहेगा डेटा। यस, यस सर। So this is one of the option. Now let me show you some more option. So ये तो जनरल चीज है, स्टार्ट करना है, then you can click on start, server will be start again, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। Here the status will be changed to the running. So restart हो गया, स्टार्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, स्टॉप हो गया। हाइबरनेट ये अभी ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है, दिस इज अंडर प्रीव्यू। कैप्चर आई विल डिस्कस लेटर ऑन, इससे हम इमेज बना सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन टू क्रिएट द इमेज, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। इफ यू वांट टू डिलीट दिस सर्वर, so you can just click on the delete, then you can delete it. If you will delete the server, you can choose what you want to delete. Do you want to delete the OS disk also? So OS disk delete कर सकते हो आप, चेक कर दो। डेटा डिस्क डिलीट करना है, चेक कर दो। NIC कार्ड डिलीट करने हैं, चेक। पब्लिक IP चेक। इफ यू वांट टू leave anything, you can just leave it. Let's say I want to delete only VM along with the OS disk, but I want to save my data disk. मुझे data disk delete नहीं करनी है। I want to use this data disk in another new virtual machine, जैसे कल मैंने connect करके दिखाया था आपको। So if you want to save your data disk because you have some important data here, then you can remove the checkbox. आप इसको check मत करो, just delete the VM only. If you want to save your public IP, you can just remove the checkbox. OS disk also, if you want to save, you can just remove the checkbox. So ऐसी possibilities है, if you want to delete something, you can do that. Now the VM is started. Now let me show you some more options. So tag option I have shown you earlier. Tag वगैरह change करना है, so we can go to the tag and we can always change it. We can do the editing and we can save. So these are some general options. Whatever activity you are doing with the server, there will be logs. Whatever admin related activity you are doing with the server, there will be logs. So if I have restarted something, if I have stopped something, if I have increased any hardware, there will be logs, and the logs will be generated in the activity log section. If you go to the activity log area, here the logs will be generated. It takes some time. It does not get generated on the spot. It takes some time. Here you can see I just did the start. So you can see the start log is there. 2 minutes ago, I have restarted my server. You can see the date and timing as well. And you can see my ID as well. You will be able to see the ID who has done the activity. So this is my ID. See, I'm logged in with this ID. So you can see from this ID, we have done the start. And if you expand this, you can see we have started the virtual machine. Then 9 minutes ago, I have deallocated the virtual machine, so you can see the logs as well along with the ID. So whatever activity will happen, if I will change the size, if I will add any, let's say hardware, so all the time there will be the logs. And this log has a retention period. Microsoft will erase these logs after 30 days. The retention is for 30 days only. If you want to keep it for longer time, you can export the logs or you can download it in the Excel format. But by default, it will be on the portal for 30 days. So there is a filter also. This is showing you the log for last 6 hours. If you can click on this filter, you can check it for the last month. You can do the customized setting as well. If you want to see the log for a particular timing, you can just choose the timing and apply. So for 30 days, the logs will be there. If you want to keep it for longer duration, always download the logs. Otherwise, by default, Microsoft will save it for 30 days. So Pooja again wants to ask something. Yes, Pooja? सर लॉक्स होता क्या है? मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसकी हिस्ट्री, उसको लॉग्स बोलते हैं। ओके 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 ओके, हिस्ट्री, Okay? ओके Yeah. यस। So this is one of the logs thing. So all the logs will be generated in the activity log. We have a lot of logs option. One option is activity log. Another option will be the log analytics workspace. Another option will be the monitor logs, metric logs. So we will discuss about all the logs in future. अभी मैंने एक ही log बताया, activity log. We will discuss all the logs in future. बहुत सारे logs हैं.
In the diagnose and solve problem, you can see the detail of this server. If there is any issue at the Microsoft end, or if there is any health issue with the virtual machine, you can check it from here. So right now, no Azure health events detected. It means there is no issue right now. अभी कोई इसमें issue नहीं है. The server is properly working, and from here you can get the troubleshooting guidelines as well. See, here there are a lot of troubleshooting guidelines. So if there is any issue, you can always go. Just like, let's say there is any patching issue, you can just click on this link, then it will show you some troubleshooting steps. You can just choose the pointers, what issue you are facing. Let's say I am facing the issue patching is not getting started. You can click on next, then it will show you some steps. See, troubleshooting steps it will show you. So this is the part of automation. Because of the Copilot, the cloud life has become easy. पहले सब कुछ खुद ट्रबल शूट करना पड़ता था, बट नाउ इट इज 60% ऑफ द ट्रबल शूटिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ असिस्टेंस. एआई की वजह से आजकल स्टेप्स मिल जाते हैं. सो 60% ऑफ ट्रबल शूटिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एआई असिस्टेंस. बाकी 40% में तो दिमाग लग ही जाता है. बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो अब आजकल यहाँ से सॉल्व हो जाती है. इट विल शो यू द इशू, इट विल शो यू द रेजोल्यूशन, पूरी पूरी डिटेल दे देगा. बिकॉज ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये सब हुआ है. नाउ दिस इज द कनेक्ट ऑप्शन जो अभी हमने यूज किया था. यू कैन डाउनलोड द आरडीपी फाइल एंड यू कैन कनेक्ट विद द वीएम. बेस्टियन आई विल डिस्कस नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Windows Admin Center means here if you will click. So these are some of the tools which will help you to manage the operating system. And this is not the part of our curriculum. This is the part of security. AJ500. There is a course AJ500, Microsoft Certified Security Associate in Azure. So security का topic है ये admin center, not for us. Network settings we will discuss in future. ये सारा ही करेंगे हम. These all we are going to cover. सब कुछ. Network settings, load balancer, everything. So if you go to the network setting, there will be some options. ये सब हम देखेंगे practically. For now, let's not discuss. Let's go to the setting. So disk I already discussed yesterday. If you want to change the size of this C drive, which is 127 GB, you can always click on the disk and you can go to the size plus performance, same in the same manner, and you can change the sizes from here. So let's say right now it is 127 GB. If I want to, let's say, make it 256 GB, I can just select and I can save. But there is a limit here. You cannot make the changes in the C drive in the running server. You have to shut down the server, means you have to deallocate. रनिंग सर्वर स्टेटस में आप कभी भी सी ड्राइव के साइज को चेंज नहीं कर सकते. यू हैव टू डीएलोकेट द सर्वर, देन ओनली यू कैन चेंज द साइज. बट इन द रनिंग सर्वर यू कैन ऑलवेज चेंज द साइज ऑफ द डेटा डिस्क. डेटा डिस्क के साइज को कभी भी आप रनिंग एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हो, नॉट ओएस डिस्क. ये याद रखना, दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फॉर यू. सर्वर ऑन स्टेट में है, डेटा डिस्क में कभी भी चेंजेस कर सकते हो. यू डोंट हैव टू शट डाउन द सर्वर, बट इफ यू वांट टू मेक द चेंजेस इन द सी ड्राइव, you have to shut down the server. You have to just do the deallocation. So process वही है, but server shut down करना पड़ेगा. Notification also you can see here. Now let's move to the VM again. तो ये सब करके देख लेना. These are some very basic things. Extension I will discuss later on. There is one option, operating system. If you click on the operating system, here you will be able to see the detail of the OS that you are running. So it is Windows Server, and it is Windows Server 2022 Data Center Edition. Administrator username is vmadmin and the server name is vm01. फिर वो licensing का option आ रहा था during the deployment. So if you want to use it right now, you can also do it. पैसे बचाने के लिए, if you have some on-prem license. Configuration. This is like what options you have chosen during the deployment. Deployment के टाइम पे जो हमने next किया था ना, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने क्या क्या चूज किए थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, leave it. There is one advisor in the Azure. There is one advisor, we call it Microsoft Advisor, MA. So Microsoft Advisor will work like a antivirus, और इसको आप स्कैनर बोल सकते हो. It works like a scanner. Whatever resource we are running on the Azure cloud, it performs the scanning. ये scanning करता है उनकी, and it will give you the feedback if there is something which is lacking, if there is any security concern,
if there is any vulnerability, if there is any weakness, it will guide you with the steps. It will show you that weakness that you are not following up the guidelines, and it will also show you the option to fix it. Right now you can see we are following all the recommendation. मतलब हम सब कुछ बढ़िया से चला रहे हैं, there is no issue. But if there will be any issue, अगर जो मैंने सर्वर बनाया, if there is any weakness in that server, if there is any security issue in that server, here it will give me the recommendation along with the troubleshooting steps also. Fix करने का step भी बता देगा. So this is very important tool in the company, क्योंकि ये सिक्योरिटी फिक्स करने में हेल्प करता है कंपनी की. आपको एडवाइजरी दे देगा फ्री में. यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस फॉर द एडवाइजरी. अपने आप ही स्कैन करेगा, अपने आप ही यहाँ पे एडवाइजरी आने लग जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन इट एंड यू कैन फिक्स इट. कोई भी कमी रह गई है, यू कैन जस्ट read that and you can fix it. So it is a free thing. Then in the property you can see the details of the VM. उस पे कौन सी आईपी चल रही है, उसका नाम क्या है, व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द प्राइवेट आईपी, कौन सा ओएस है, ये सारी चीजें बता देगा. मतलब सब्सक्रिप्शन किस में है, रिसोर्स ग्रुप नेम क्या है, एवरीथिंग यू कैन सी. देयर इज a लॉक ऑप्शन. लॉक विल प्रिवेंट योर रिसोर्स फ्रॉम द एक्सीडेंटल डिलीशन. लॉक आपके रिसोर्स को एक्सीडेंटली डिलीट होने से बचाता है. If I will right now click on the delete option, I can delete the server. पूरा VM delete हो जाएगा. And if I will delete the resource group, so resource group can also be deleted directly. So whatever resources are there in the resource group, they all will be deleted. ये सब कुछ delete हो जाएगा. But accidentally anyone can delete my resource in the company then. कोई गलती से मेरा resource delete कर देगा, मान लो ऐसे तो. If anyone will delete my virtual machine, which is my server in the company, there will be production impact. There is a business impact. So if I want to protect my resource from the accidental deletion, I can apply the lock. And lock is there with every resource. ऐसा नहीं है VM के लिए locks है. Whatever practical you will do in the Azure, there is a lock for everything. So you can apply the lock. You can just go to the VM. If I want to apply it on the VM, I can go to the VM, and in the VM, scroll down, and under the settings, there is a lock option. Just click on the locks, click on add, just give any name. I will give L1. If you want to add any notes, you can. There are two types of locks, read only and delete. If you will apply the read only lock, so with the read only, you cannot make any changes with the resource. अगर मैंने read only लगा दिया, so I cannot do any changes. I will show you how. And if I will apply the delete lock, you cannot delete the server. आप server delete नहीं कर सकते फिर. Let's suppose if I will apply delete. Delete लगा दिया मैंने, click on OK. Now there is a delete lock. If I will try to delete this server, अगर मैं इसको delete करूंगा, आप see, force delete कर रहा हूं मैं, click on delete, see, fail. It will not happen because you can see the scope is locked. इस lock लगा हुआ है देखो. So this will prevent your resource from the accidental deletion. Even if I will try to delete the resource group, I will get the error. If I will go to the resource group, this is the resource group pop. If I will try to delete it, so I will get the error. Paste the resource group name, delete, delete. There will be error. See, again error because there is a lock. So this will prevent your resource from the accidental deletion. If you want to delete it, you have to remove the lock. Just go to the VM and remove the lock from there. Click karo, let it load. Click on this and delete the lock. Go to the lock option and delete. You can just delete it. Then now you can delete the server. But I will not delete it. मैं अभी server delete नहीं कर रहा हूँ. There is another lock. If you click on add and if you apply the read only lock, अगर मैंने read only का lock लगा दिया, let's say the lock name is L1. Okay. Now there is a read only lock. With the read only lock, now let's suppose I want to go to the disk option. मैं disk में गया and here I want to detach the disk. Click on apply. See, I cannot. नहीं कर सकता मैं because my scope is locked. If I want to, let's say, add any data disk, data disk add करना है मुझे, disk -02 के नाम से 4 GB size. Click on apply. Let's see if it will happen or not. होगा कि नहीं होगा देखते हैं. No,
बिकॉज देयर इज अ लॉक। रीड ओनली का लॉक लगाने के बाद यू कैन नॉट मेक एनी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ऐसे तो कोई भी बंदा साइज बढ़ा देगा फिर, गलती से, मान लो गलती से। So just to prevent these kind of accidental things, we have the locks. And with the lock, with the read-only lock, if I will try to delete the server again, मैं delete करके देखता हूँ. Let's see if it will happen or not. So delete. See, with the read-only lock, you cannot delete anything. Delete भी नहीं कर सकते आप. Means you cannot do anything. If I will remove the lock, and this time I will apply, let's say delete lock. अब मैं delete lock लगा रहा हूँ with the name of L1. नाम कुछ भी दे दो. Okay. Now, if I want to make any changes in the disk, let's say I want to detach this, I can just click on detach, click on apply. Now it will happen. अभी हो जाएगा देखो. Because with the delete lock, I can make the configuration changes, but I cannot delete the server. Server delete नहीं कर सकता मैं. If I have applied the delete lock, I can make the configuration changes, but I cannot delete my server. But if I have applied the read only lock, अगर मैंने read only का lock लगा दिया, I cannot make any configuration changes. Plus, I cannot delete the server as well. Just remember this. This is one of the security option. इंटरव्यू में पूछ सकता है, how can you prevent your server from the accidental deletion? So you can apply the locks. फिर वो locks में type पूछेगा. What are the types of lock? So read only and delete. Where we can apply the lock, lock किस scope पे लगा सकते हो? So you can apply the lock on the subscription level, on the resource group level and on the resource level. तीन जगह पे आप lock लगा सकते हो. If you will apply the lock on the entire subscription, उस subscription में जितने भी resource group या resource बनेंगे, you cannot make the changes over there. If you have applied the lock on the resource group level, पूरे resource group में जितने भी resource बने हैं वो सबके सब delete नहीं कर सकते आप. और अगर आपने रिसोर्स लेवल पे लगा दिया तो सिर्फ उस रिसोर्स पे नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे हमने वीएम लेवल पे लगाया है, सी स्कोप इज वीएम. बट अगर मैं रिसोर्स ग्रुप लेवल पे लगाता, लेट्स से इसका रिसोर्स ग्रुप है पॉप. सो इफ आई विल डायरेक्टली गो टू द पॉप, हियर आल्सो आई कैन अप्लाई द लॉक. सी इफ यू स्क्रॉल डाउन देयर इज अ लॉक ऑप्शन. ये वीएम का दिखा रहा है कि इसके अंदर एक वीएम है जो कि लॉक है, सी VM01. बट इफ यू डिलीट दिस और यहाँ पे जाके ऐड करके इफ यू विल अप्लाई द रीड ओनली लॉक, लेट्स से डिलीट लॉक ऑन द कंप्लीट रिसोर्स ग्रुप लेवल, पूरे के पूरे रिसोर्स ग्रुप पे अगर आपने लगा दिया, सो नाउ इट इज ऑन द स्कोप रिसोर्स ग्रुप लेवल. whatever resources are there inside this resource group, if you click on this, you will see a lot of things are there inside this resource group. You cannot delete them. इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, इंक्लूडिंग द वीएम पे भी लॉक लग गया है अब. सो यू कैन अप्लाई द लॉक ऑन द रिसोर्स ग्रुप लेवल, ऑन द रिसोर्स लेवल एंड ऑन द सब्सक्रिप्शन. अगर आपने पूरे सब्सक्रिप्शन में, सब कुछ सब्सक्रिप्शन के अंडर होता है ना, इफ यू गो टू द सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू विल लॉक द एंटायर सब्सक्रिप्शन हियर, यहाँ पे पूरे सब्सक्रिप्शन को लॉक कर दिया आपने. ये देखो अभी बता रहा है कि रिसोर्स ग्रुप लॉक है. पूरा सब्सक्रिप्शन लॉक कर दोगे, नो रिसोर्स ग्रुप, नो रिसोर्स कैन बी डिलीटेड. एंड इफ यू विल अप्लाई द रीड ओनली लॉक, नो चेंजेस कैन बी डन. सो ये लॉक्स की डेफिनेशन है. नाउ फिर से चलते हैं वीएम पे. Go to the VM and let me show you some more options. Pooja wants to ask something. Yes, Pooja. सर जैसे कि अभी मैंने दिन भर कुछ काम किया हम्म, और अभी मैंने उस पे लॉक लगा दिया लाइक, हम्म. और अभी जब मैं मॉर्निंग में उस पे फिर से काम करूंगी कुछ, तो मुझे वो लॉक रिमूव करना पड़ेगा पहले. नहीं, वो काम तो कर पाओगे. लॉक लगाते हैं कि हम एडमिन लेवल पे कोई चेंजेस ना कर सके. मतलब ये पोर्टल पे से कोई VM को जैसे उसके साइज में चेंजेस ना कर सके, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ना कर सके, या फिर सर्वर को शट डाउन ना कर सके, उसके लिए लॉक लगता है. उसके अंदर कोई डेटा पे काम कर रहे हो उस पे लॉक नहीं लगता, वो तो एज इट इज रहेगा फिर. ओके, हाँ मतलब सर रिसोर्स ग्रुप लाइक ऐसा कुछ अगर हम नहीं डिलीट कर पाएंगे अगर लॉक लगा रहे तो, राइट. बट उसमें चेंजेस कर पाएंगे, मतलब रिसोर्स ग्रुप में जाके काम कर पाएंगे ऐसे. काम कर पाओगे. अगर रीड ओनली लॉक लगा दिया तो रिमोट भी नहीं ले पाओगे VM का. ओके ओके. यस. डिलीट लगाने से सिर्फ डिलीट नहीं होता, बाकी सारे काम कर पाओगे. ओके, गॉट इट. ओके. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर ऑप्शन. सो लॉक्स भी समझ लिया. साइज, इफ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ द VM, जैसे अभी कौन सा साइज है, इफ आई गो टू द ओवरव्यू, यू कैन सी वी हैव 1 CPU एंड 3.5 GB ऑफ रैम. और ये किसमें है, DS1 B2 में है. इफ आई वांट टू चेंज दिस साइज, आई कैन ऑलवेज गो टू द साइज ऑप्शन
and I can change the size. Go to the size, and these are the options जो हमने discuss किए थे starting में. Right now it is DS1B2. If you want to change it to D2SB2, select करो. Here you will get 2 CPU, 7 GB of RAM. Let's say I want to go with D2SB3, where I will get 2 CPU and 8 GB of RAM. So just choose and click on resize. Then again resize. Now it will change the size of my hardware. तो कभी भी साइज चेंज करना हो, यू कैन ऑलवेज डू दैट. इफ यू वांट टू इंक्रीज, यू कैन ऑलवेज डू दैट. इफ यू वांट टू डिक्रीज द साइज, यू कैन ऑलवेज डू दैट. मान लो आज मेरे को ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत थी, मैंने इंक्रीज कर दिया. कल मेरे को कम करना है, फिर से मैं कम कर सकता हूँ. सो डाउन साइज एंड अप साइज इज ऑलवेज पॉसिबल, एंड यू कैन नॉट डू दिस इन द रनिंग एनवायरमेंट. द सर्वर विल बी रीस्टार्टेड ड्यूरिंग दिस इवेंट. जब आप साइज को चेंज कर रहे हो हार्डवेयर के, तो उस टाइम पे आपका सर्वर रीस्टार्ट होता है. तो ये भी याद रखना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. अगर आपने रिमोट लेके रखा हुआ है, तो रिमोट विल गेट डिस्कनेक्टेड, सर्वर विल गेट रीस्टार्ट. उस केस में सर्वर रीस्टार्ट होगा, उसके बाद आपको दोबारा रिमोट लेना पड़ेगा. तो resize is done now, and now if you go to the overview, you can see the size has been changed. मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश द एंटायर ब्राउजर. So now you can see we have 2 CPU and 8 GB of RAM. बढ़ गया साइज, स्टैंडर्ड D2SB3 हो गया. If I want to downsize this, again I can go to the size option and I can always change it. मैं इसको डाउनसाइज कर सकता हूँ. लेट्स से आई वांट टू अगेन रिवर्ट बैक टू द 1 CPU and 3.5 GB RAM. चूज इट एंड देन रीसाइज, देन अगेन रीसाइज. फिर से साइज चेंज हो जाएगा. सो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द साइज ऑलवेज. तो ये देख लेना. Availability scaling we will discuss in the next class. This is the part of high availability. Identity option we will discuss when I will discuss about Azure Active Directory. तब हम discuss करेंगे. Defender is a different topic. It is the part of security, AJ500. So we will not discuss the Defender in detail. For your information, Defender is an antivirus of the Microsoft. So whatever servers we run on the Azure cloud, Microsoft Defender is the default antivirus which will protect all the servers from the hacking, from the cyber attacks. So this is one of the biggest topic in the security. So when someone go with the security option AJ500, this detailed training will be introduced. ये उन लोगों के लिए है जो security पे काम करते हैं. Backup and disaster recovery, all these three options we will discuss after 2 months. 2 या 2.5 months के बाद ये वाला टॉपिक आएगा practically. That time I will show you how to take the backup. So for now, let's not discuss. Auto shutdown, I already discussed with you. There is one option, run command. So if you want to run any command without taking the remote of the server, आपको सर्वर के अंदर कोई कमांड चलानी है या फिर कोई स्क्रिप्ट चलानी है, एंड यू डोंट वांट टू टेक द रिमोट, बिना रिमोट लिए, देन यू कैन यूज दिस रन कमांड ऑप्शन. लेट्स से देयर इज सम इशू, मान लो कोई इशू आ गया सर्वर पे, यू कांट टेक द आरडीपी, आप रिमोट नहीं ले पा रहे हो, आपके पास एक स्क्रिप्ट है, आपको लगता है कि वो स्क्रिप्ट चलाऊंगा तो मेरा इशू फिक्स हो जाएगा, मान लो. सो सर्वर का रिमोट तो आ नहीं रहा. इन दैट केस यू कैन रन दैट स्क्रिप्ट फ्रॉम द रन कमांड. या फिर आपका सर्वर ठीक है, बट यू डोंट वांट टू टेक द रिमोट, यू वांट टू रन द कमांड फ्रॉम आउटसाइड. सो रन कमांड में जाओ एंड यू कैन जस्ट रन योर स्क्रिप्ट. कोई स्क्रिप्ट चलानी है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रन पावरशेल स्क्रिप्ट, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो स्क्रिप्ट, देन क्लिक ऑन रन. मैं आपको छोटी सी चीज करके दिखाता हूँ. लेट्स से आई वांट टू चेक द आईपी डिटेल्स, बिना रिमोट लिए मेरे को आईपी डिटेल्स चेक करनी है. सो देयर इज वन ऑप्शन आईपी कॉन्फिग, जस्ट क्लिक ऑन आईपी कॉन्फिग. देयर इज वन स्क्रिप्ट, ये होती है स्क्रिप्ट, देखो ये बना के रखी है माइक्रोसॉफ्ट ने. सो आईपी चेक करने के लिए इतनी सारी इंक्रिप्शन है. सी, दीज आर द इंक्रिप्शन, कि आपके इस बीएम का आईपी चेक करने में कोई हैकिंग ना हो जाए. सो दैट इज व्हाई देयर इज ए इंक्रिप्शन की, ये सब इंक्रिप्शन है. और कमांड कौन सी चल रही है, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, इसी से आईपी चेक होता है ना, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल. क्लिक ऑन रन. नाउ इट विल शो यू द आउटपुट. सर्वर का रिमोट लिए बिना हम रिजल्ट देख पाएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रन कमांड. सो इफ देयर इज एनी ट्रबल शूटिंग, if the remote is not happening, then we use the run command option to run the scripts or to run any command. कोई भी कमांड चलानी है, फोर्सफुली रीस्टार्ट करना है सर्वर को, so if you want to do it using the command, you can run the command from here. So अभी ये देखो चला रहा है, it is in progress, then it will show you the result. थोड़ा वेट करते हैं. See, now you can see the detail. जैसे आईपी कॉन्फिग में आता है सब आ गया. ये देखो, ये आईपी, ये मैक एड्रेस, दिस इज द प्राइवेट आईपी, दिस इज द सबनेट मास्क, देन
डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सब आ जाएगा आप देखो। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रन कमांड। ये बेसिकली ट्रबल शूटिंग्स में यूज होता है ज़्यादा, अदरवाइज नहीं। देन अपडेट्स, अपडेट्स आर फॉर द पैचिंग, सर्वर को अपडेट करने के लिए। सो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स द सर्वर ऑटोमेटिकली, अपने आप ही वो अपडेट करते रहता है। whenever there is a patching it will happen automatically, but if any company is using a third party tool like sccm, then we can always use that also, otherwise it will happen automatically। अगर आपको ये बंद करना है ऑटो अपडेट, यू कैन जस्ट गो टू द अपडेट सेटिंग एंड यू कैन रिमूव इट, आप इसको बंद कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड मोर मशीन्स यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कंपनी में। देर इज ए हेल्थ मॉनिटरिंग, ये आपको हेल्थ बताएगा, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सो दिस ऑप्शन आई विल डिस्कस ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग क्लास, जब सबसे एंड में हम मॉनिटरिंग पढ़ेंगे देन आई विल शो यू। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे को नहीं पढ़ना है, दिस इज फॉर द आर्क। पॉलिसीज, ये भी सिक्योरिटी ऑप्शंस है। इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट एनी पॉलिसी, मान लो आपको एक पॉलिसी लगानी है कि अगर मैं टैग ना डालूं तो बीएम बने ही ना। कंपनी में पॉलिसी लगी होती है ना, मैं बिना टैग के बीएम ही नहीं बना सकता। अगर मैंने लॉक नहीं, अगर अपने आप ही बीएम बने तो उस पर लॉक लग जाए अपने आप ही, तो उसके लिए यहाँ से ऑटोमेशन पॉलिसीज लगती है। जैसे मैं चाहता हूँ मैं कुछ भी क्रिएट करूँ अपने आप ही लॉक लग जाए, मैं बार बार लॉक क्यों लगाऊंगा, अपने आप ही बन के लॉक लग जाए उसके ऊपर। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज यहाँ से बना सकते हैं हम, ये मैं दिखाऊंगा आपको इन फ्यूचर, बट अभी तो बस जान लो इसके बारे में। इन्वेंट्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये किसी और चीज़ के लिए है। इट इज़ फॉर द व्हाट वी कॉल इट लाइसेंसिंग टीम, जो इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करती है। चेंज ट्रैकिंग, इट इज़ अगेन नॉट फॉर अस, ये भी सब एसेट मैनेजमेंट टीम के लिए है। मॉनिटरिंग वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर, ये सब हम फ्यूचर में देखेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, इनेबल कैसे करते हैं। इन द ऑटोमेशन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, दिस इज नॉट फॉर अस। जब हम डेवऑप्स पे जाएंगे तब हम थोड़ा सा ऑटोमेशन अलग लेवल पे पढ़ेंगे, बट नॉट दिस वन, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ AJ 305 एंड दीज ऑप्शंस वी विल डिस्कस। तो इसमें से एक चीज अभी बता देता हूँ, इफ यू वांट टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ द सर्वर, गो टू द रीसेट पासवर्ड। मान लो पासवर्ड भूल गए आप, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड अपडेट द न्यू पासवर्ड, देन अपडेट। नया पासवर्ड डाल दो, पुराने को याद रखने की जरूरत नहीं है, यू आर द एडमिन, सो यू कैन मेक द चेंजेस। पासवर्ड नया सेट करो, क्लिक ऑन अपडेट, द पासवर्ड ऑफ द VM विल बी चेंज्ड। ट्रबल शूटिंग में फ्यूचर में बताऊंगा, परफ डायग्नोस्टिक आई विल डिस्कस इन द फ्यूचर। VM इंस्पेक्टर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इट इज इन द प्रीव्यू। Redeploy and reapply, let's talk about this option, this is again important। पूजा, yes पूजा। सर हम इसमें एडमिन रहेंगे ना? हाँ एडमिन रहोगे ना, क्लाउड एडमिन हो तो ना। सर हम अदर्स को भी एडमिन के राइट दे पाएंगे क्या? मतलब यस, सपोज मेरे कलीग। दे सकते हो, दे सकते हो। ओके सर, ओके। सो दे कैन आल्सो रीसेट द पासवर्ड बिकॉज दे यस, हैव एडमिन राइट। यस। ओके सर। So there is one option here, redeploy plus reapply. What is the meaning of this? When there is any issue with the VM, if someone is not able to take the remote of the VM, there may be some OS level issue। मान लो रिमोट नहीं आ रहा VM का, जो VM बनाई है उसका रिमोट नहीं आ रहा, there might be some OS level issue। So in the troubleshooting what we can do, we can click on the reapply। reapply will rerun the VM provisioning, मतलब ये VM को दोबारा से डिप्लॉय करेगा इन द बैकएंड, बैकएंड में VM को दोबारा से डिप्लॉय करेगा। इफ देयर इज एनी फेल स्टेट ऑफ द VM, अगर VM फेल हो गई है, it will rerun it and it will fix the issue। So there are 40% chances that if the VM remote is not coming, after doing the reapply the issue will get fixed, क्योंकि वो OS को रिपेयर कर देता है अपने आप ही। So if the server remote is not happening, you can always do the reapply। ये ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। आफ्टर द रीअप्लाई स्टिल द इशू इज देयर, तब भी इशू है, स्टिल यू कैन टेक द रिमोट, देन द नेक्स्ट स्टेप इज यू कैन डू द रीडिप्लॉय, तब आप कर सकते हो रीडिप्लॉय। व्हाट द रीअप्लाई रीडिप्लॉय विल डू, आई टोल्ड यू दैट देयर विल बी रैक्स इन द माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर, रैक बने होते हैं। इन द रैक वी हैव सम फिजिकल सर्वर्स, और किसी ना किसी एक फिजिकल सर्वर पे मेरा VM इंस्टॉल्ड होता है। दिस इज द प्रोसेस व्हेन यू विल डू द रीडिप्लॉय। सो रीडिप्लॉय विल चेंज द फिजिकल सर्वर ऑफ द VM। अभी VM यहाँ पे है, इट विल माइग्रेट इट टू द अनदर फिजिकल सर्वर, क्योंकि हो सकता है देयर माइट बी इशू दैट इन द रियल फिजिकल सर्वर देयर इज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम एट द माइक्रोसॉफ्ट एंड,
एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर अनेबल टू टेक द रिमोट। आप रिमोट नहीं ले पा रहे हो क्योंकि हो सकता है फिजिकल सर्वर में कनेक्टिविटी इशू हो। सो व्हेन यू विल डू द रीडिप्लॉय विल चेंज द फिजिकल होस्ट ऑफ द वीएम। वो इस वीएम को उठा के किसी दूसरे फिजिकल सर्वर पे मूव कर देगा। एंड इफ द इशू वाज रिलेटेड टू द फिजिकल सर्वर दैट विल गेट फिक्स, क्योंकि आपने तो मूव कर दिया वीएम। नाउ यू विल बी एबल टू टेक द रिमोट। बट इफ यू विल डू द रीडिप्लॉय, whatever data is there in the temp disk that will be lost। इसलिए temp disk में कुछ भी रखना नहीं चाहिए, that will be lost। and public IP आपकी change हो जाएगी। if the public IP is static it will not be changed, but if it is dynamic public IP it will get changed। nowadays starting from 2024 Microsoft has made it mandatory to be all the IP static in the VM। जो भी आप VM पे पब्लिक IP अटैच कर रहे हो वो सबकी सब अभी स्टैटिक ही होती है। सो इट विल नॉट गेट चेंज्ड आफ्टर द रीडिप्लॉय। बट 2024 से पहले पहले क्या होता था, द IP वाज डायनेमिक, हमें उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करना पड़ता था। इफ वी हैव नॉट कन्वर्टेड दैट इनटू स्टैटिक, सो रीडिप्लॉय के बाद पब्लिक IP चेंज हो जाती थी, बट अब नहीं होती। by default nowadays it is static only। so 2024 से static हो गया है, so you don't have to worry about the IP change, but temp disk में जो भी data है that will get erased, वो हट जाएगा। so these two are the troubleshooting options। आप इसको वैसे भी चला सकते हो, रीअप्लाई पे क्लिक कर दो, रीअप्लाई हो जाएगा दोबारा से। रीडिप्लॉय करोगे तो होस्ट चेंज, बट जनरली वी यूज इट ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग। ये देखो बता भी रहा है कैन नॉट कनेक्ट टू योर VM। तो मेरे को चलाओ, मेरे को चलाओगे तो ये होगा, मेरे को चलाओगे तो ये होगा। तो अभी देखो बहुत जल्दी हो गया क्योंकि अभी कोई इशू था ही नहीं ना, इसलिए। इफ देयर इज अ रियल इशू इट विल टेक 5 मिनट 10 मिनट्स एज वेल, क्योंकि रिपेयर करेगा पूरे VM को। तो इशू आएगा तो ये ट्रबल शूटिंग होती है। बाकी देयर इज अ सपोर्ट प्लस ट्रबल शूटिंग। दिस ऑप्शन इज द AI ऑप्शन। कोई भी इशू आ रहा है यहाँ पे सर्च कर लो, आई कैन नॉट, ऐसे ही लिख दो बस, कैन नॉट कनेक्ट विद VM। तो ये आपको कुछ स्टेप्स बता देगा, एंटर। ये देखो क्या इशू आ रहा है बता दो इसको। विंडो चला रहा हूँ, विंडो में इशू आ रहा है। देन रिसोर्स ग्रुप पॉप है मेरा। दिस इज AI थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या क्या पॉसिबल इशू है चूज करते रहो, क्या हो रहा है देखो। मैं इसका रिमोट नहीं ले पा रहा, आई कैन नॉट टेक द RDP, चूज कर लो, नेक्स्ट कर लो। ये सब बता देगा देखो, अभी बना रहा है ये। सी, ये देखो कह रहा है ये रीडिप्लॉय किया अभी आपने, ये करके देख लो, वो करके देख लो, रीसेट कर लो NIC। तो पूरा पूरा स्टेप एक एक लिंक के साथ, यू कैन डायरेक्टली क्लिक हियर एंड यू कैन फिक्स द इश्यूज। सो फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा ये कंपनी में AI, इसको ट्रबल शूट करने के टाइम पे। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रबल शूट एनीथिंग देन यू कैन रेज ए टिकट टू द माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी में अगर सारी ट्रबल शूटिंग ट्राई कर ली है, आप मान लो L1 L2 के इंजीनियर हो, यू हैव डन ऑल द ट्रबल शूटिंग, आपसे नहीं हो रहा, आपका केस एस्केलेट होगा L3 इंजीनियर को। L3 इज द सीनियर, दे आर द वेरी सीनियर पीपल, दे विल ट्राई टू फिक्स द इशू। उनसे नहीं हुआ तो आगे नहीं जाता, L4 लेवल पे जाता ही नहीं है। बिकॉज L4 लेवल पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो जनरली इशू नहीं देखते, बहुत ही कम। बहुत बड़ा एस्केलेशन है देन दे विल टेक केयर ऑफ दिस, अदरवाइज नहीं देखते। L3 लेवल से ही अगर नहीं फिक्स हुआ देन द टिकट विल बी क्रिएटेड विद द माइक्रोसॉफ्ट। क्योंकि कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट लेवल पे इशू होते हैं, तभी हमसे फिक्स नहीं होता। सो माइक्रोसॉफ्ट को टिकट रेज होती है, देन माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर विल फिक्स द इशू। वो प्रोसेस मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। देर इज कोस्टिंग, देर इज सम प्राइसिंग प्लान विद द कंपनी, कंपनी सपोर्ट का परचेज प्लान परचेज करती है वहाँ पे। तो वो सब मैं समझाऊंगा आपको फ्यूचर में, बट अभी इस पे नहीं पढ़ते हैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, दिमाग में फिर समझ में नहीं आएगा। यस पूजा। सर L1 लेवल का एस्केलेशन मतलब हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन से एस्केलेशंस L1 में आएंगे? वो टिकट जो आपको आ रही है ना, वो आप ही के लेवल पे यस। आएगी। हाँ, या वो पोर्टल पे ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ, ठीक है। गॉट इट सर। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स विद द VM, ये सब VM के पूरे स्टेप्स थे। नाउ दिस वन इज डन। जितने भी जनरल स्टेप्स थे VM से रिलेटेड दैट वी हैव कंप्लीटेड, तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। नाउ आई एम गिविंग यू वन टास्क, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। एक प्रैक्टिकल करने को देता हूँ मैं आप लोगों को, एक VM डिप्लॉय करना नेक्स्ट टाइम। अभी मत करो, क्लास से पहले कर लेना। एंड दैट शुड बी ऑन द लाइनेक्स। लाइनेक्स में आप ये वाली इमेज चूज करना। बाकी मैं समझाऊंगा इसको, बट अभी फिलहाल आप ये काम करना, मैं डिटेल में भी समझाऊंगा क्या है ये।
So when you will deploy the Linux, that time you should choose this one. ये वाला चूज करना, Ubuntu Server 24.04 LTS, ये Linux है, ये चूज करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. एंड हियर यू हैव टू चूज द पासवर्ड. यहाँ पासवर्ड चूज करके यूजर नेम जैसे हम कर रहे थे वही सब डाल के, पोर्ट में इट शुड बी SSH22, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. ऐसे करके एक लाइनेक्स डिप्लॉय करो नेक्स्ट टाइम, और उसका रिमोट लेके ट्राई करो इफ द रिमोट इज कमिंग और नॉट. बाकी मैं भी कराऊंगा ये, बट एक बार आप खुद से करके देखना. देन आई विल ऑल्सो रिपीट दिस प्रैक्टिकल. उसके बाद व्हाट विल बी अवर टारगेट फॉर द नेक्स्ट वीकेंड. VM से रिलेटेड स्टफ्स हो गया है. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट HA. दिस इज वेरी बिग टॉपिक. इट विल टेक 2 क्लासेस. सैटरडे संडे की पूरी क्लास ले लेगा ये बड़ा टॉपिक है. So here we will talk about high availability, we will talk about clusters, we will talk about availability sets, we will talk about availability zones, and we will talk about VMSS. ये तीनों ही बड़े लेवल के प्रैक्टिकल्स है, इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, और ये बेसिक नहीं है. दिस इज नॉट बेसिक. जैसे अभी तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी ना, साइज बढ़ा दो, डिस्क ऐड कर दो, रीस्टार्ट मार दो, नो. इसलिए इससे पहले ये सब चीजें समझ के आना. ये सब क्लस्टर से रिलेटेड टॉपिक्स है. मल्टीपल सर्वर्स को कैसे मैनेज करना है, एक सर्वर शट डाउन हो गया तो दूसरा कैसे इसका लोड हैंडल करेगा. सो दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये एडवांस लेवल पे है, इस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए. वैसे जितना करेंगे सब कुछ ठीक होना चाहिए आप लोगों का, नथिंग शुड बी लेफ्ट. बट ये टॉपिक करने से पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके आना अपनी. सो लाइनेक्स डिप्लॉय करके देख लेना, अदरवाइज आई विल डिप्लॉय इट ऑन द सैटरडे. फिर सैटरडे को हम ये थ्योरी पढ़ेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिकल AS, AZ and VMSS. So after every practical, always delete the resource group and make sure there should not be any lock. Lock लगा होगा तो आप delete नहीं कर पाओगे. Just like I have enabled one of the locks, so let me delete that. उसके बाद resource group को सीधा delete after every practical. Not in the company. Company में मत कर देना, वहाँ पे कुछ delete नहीं होगा. So with this, we have come to the end.